हे गाइस, वेलकम बैक टू फिटनेस इन्फिनिटी। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था बेस्ट प्री वर्कआउट, और हम कुछ और क्वेश्चन ऐसे लेंगे कि कौन सी ब्रांड बेस्ट है राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, और कुछ और क्वेश्चंस कि हमें लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, जो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हो। So let's start. This video we'll be talking about the pre-workout from Naturyz. So I just want to say कि ये आइडिया कहाँ से आया। So 3 या 4 दिन पहले मैं वर्कआउट कर रहा था and I took that pre-workout, और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मैं उसके बारे में रिव्यू करूँगा एंड ऑल, बट मैं श्योर नहीं था उसके बारे में। बट दिस इज द डे वी गोना डू द रिव्यू ऑफ pre-workout from Naturyz, and for that we have to head back. We'll rewind this thing, और हम 3 दिन पहले जाएंगे जब मैंने वो एक्चुअली में लिया था, कंज्यूम किया था एंड मेरा रिव्यू किया था उसके बारे में। सो लेट्स रिवाइंड। Hey guys, now I'm gonna do a workout which will last around 45 to 1 hour, जिसमें मैं around 5 kilometers run करूँगा, और उसके बाद फिर मैं कुछ body weight workout, some cool stuff, push-ups, variation and all, pull-ups thing. So guys, let's start. I'm done. Now it's time for doing some calisthenics workout, some bodyweight workout, और मैं इसको Instagram पे अपलोड करता हूँ. So guys, make sure don't forget to connect with me on Instagram. So guys, right now due to some factors like गर्मी, धूप, और खाना नहीं खाया मैंने टाइम पे, आज 2 ही मील्स हुए हैं, प्रॉपर एनर्जी नहीं है. So यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स काम आ सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं प्री वर्कआउट. अंडर सम सिचुएशंस एंड कंडीशंस दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल. और आज मैं ट्राई करने जा रहा हूँ द वेरी फर्स्ट टाइम प्री वर्कआउट, अ काइंड ऑफ अ प्री वर्कआउट विच इज़ वेरी यूनिक बाकी दूसरे ब्रांड के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से, जस्ट बिकॉज कि मैं अभी थक चुका हूँ. लाइक मेरा भी उतनी कैपेसिटी, उतनी इफिशिएंसी नहीं है अपने वर्कआउट. लाइक रनिंग करने के बाद आई एम टोटली डन. सो मैं यहाँ पे कंप्लीट करके अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं पूरा वर्कआउट कंप्लीट करना चाहता हूँ. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये ट्राई करूँ आज, और आप लोगों के सामने मैं दिखाऊँ कि आफ्टर ऑल मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग, ऑल दैट स्टफ. सो लेट्स गो, लेट्स यूज दिस वन. So let's focus, let's have a pre-workout right now and then get back to work. Actually, I forgot about my shaker and I don't know कि अब मैं कैसे यूज़ करूँगा, किस में इसको मिक्स करूँगा. So I have like no clue about this. But you don't have excuses. I found this water bottle, no shaker, no problem. I think I will be taking around 1 scoop, and 1 scoop will be enough. We're gonna successfully put inside. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'm going mainstream, flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream, mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Hey guys, welcome back to Fitness Infinity, and in this video we will be talking about the product review of pre-workout from the brand Naturyz. This Naturyz brand has its own pre-workout supplement जिसके जो main ingredients हैं वो हैं beta alanine, citrulline, creatine,
taurine, arginine and betaine. तो अगर हम देखें इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो दूसरी ब्रांड्स अलग से बेचती है, जैसे कि citrulline, creatine, arginine. तो ये जो ब्रांड है इस प्रोडक्ट के अंदर जिसका नाम है सर्च 4X, इसमें ऑलमोस्ट प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट और जो पोस्ट वर्कआउट जैसे इंग्रेडिएंट्स जो नॉर्मली ब्रांड्स अलग से बेचती हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्विंग्स. सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन. और जो इसको मार्केट कर रही है कंपनी, दैट इज सोफी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड. तो गाइस, ये तो हमने बात करी प्रोडक्ट के बारे में, उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट जो है इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और वो किस चीज में हेल्प करेगा. नाउ लेट्स जंप टू द प्रोडक्ट डिटेल्स एंड टॉक अबाउट इट्स डिस्क्रिप्शन. So the product goes with the name of Naturyz Surge 4X, in which it based on 4 important criteria, and it has 12 gram serving size and 30 servings. Now, if we talk about its authenticity, it is authorized under these 5 government bodies, and you can read their description mentioned on the screen while pausing the screen. Dope-free authentication, which simply means that there are some brands who sells their supplements with such ingredients which are harmful for your body, and the common used names are Endro, DHEA and ephedra. Now if we talk about its features, it has 16 ingredients divided into 4 categories. मैं बात करूंगा what I really liked about this product. See guys, honestly, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो, इफ़ यू नो अबाउट मी, आप लोग को पता होगा कि मैं कोई इतना सप्लीमेंट का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ. बट कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको प्री वर्कआउट लेने की ज़रूरत पड़ जाती है ना. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक डेली बेसिस पे कॉफ़ी कंज्यूम करना, फिर बनाना कंज्यूम करना, लाइक फ्रूट्स कंज्यूम करना, इट्स नॉट एक्चुअली कन्वीनियंट. तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स होते हैं वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस. तो मैं जस्ट बोलूँगा कि एक नॉर्मल एवरेज बेसिस पे अगर आप एक बनाना शेक अगर आप कंज्यूम करो, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 30 to 40 रुपीज़. या फिर अगर आप एक सैंडविच कंज्यूम करो, अराउंड 50 to 60 रुपीज़. ये एक एवरेज प्राइस है. लाइक आपको 70 to 80 रुपीज़ एक एवरेज कॉस्ट लगेगा. ऊपर से आप डेली बना नहीं सकते, आपको ख़रीदना पड़ेगा. बट अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले लेते हो तो साइकोलॉजिकली एक स्ट्रेंथ आ जाती है कि मेरे पास एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है. तो अगर जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एनर्जी नहीं है आपके पास तो आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो. एक स्कूप होता है, दैट्स इट. तो वो आपको एक चम्मच अराउंड 20 या 30 रुपीज़ का पड़ेगा. एक वेरी वेरी चीप. इन सब चीज़ों से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, समवट अगर आप आपकी लाइफ स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, आप बहुत बिजी हो, तो आप इस तरीके के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा हसल करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है. डब्बा लिया, एक स्कूप लिया, पानी में डाला, मिक्स किया, पिया, वर्कआउट करने चले गए. सो इट्स रियली कन्वीनियंट. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. इट्स कन्वीनियंट. So guys, the next point is what I didn't like in this product. I mean, kind of downsides. So guys, the 2 points which I didn't like, or maybe on behalf of all of you guys, that is the budget, and the second one is priority. प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स जितने भी हैं ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द होल फूड्स, द नेचुरल वंस. बट जैसे कि मैंने बताया, अगर हम पहले वाले पॉइंट की बात करें बजट, तो काफ़ी लोग होंगे जो बोलेंगे कि एक साथ 1600 रुपीज़ स्पेंड कर देना, आई मीन मेरे बस की बात नहीं है, इट्स टू मच. बट अगर हम जनरली बात करें तो ऑन एवरेज बेसिस आप अगर 50 रुपीज़ स्पेंड करते हो तो फॉर द नेक्स्ट कोर्स ऑफ 2 months आप ऑलमोस्ट 3000 रुपये स्पेंड कर दोगे. सो उसके कंपैरिजन में 1500 या 1600 का जो सप्लीमेंट है, इट्स टू चीप. सो दैट वाज ऑल अबाउट द 2 points. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. So guys, my conclusion is, as such, I'm not a fan of these pre-workout supplements and all. But अगर सिर्फ Naturyz brand के Surge 4X प्रोडक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो this product really impressed me. इसमें almost 5 से 6 ingredients including BCAAs इसमें mentioned है, available है. तो किसी भी तरीके का लाइक आपको एक्स्ट्रा प्री वर्कआउट या एक्स्ट्रा इंट्रा वर्कआउट या मैं कह सकता हूँ कि क्रिएटिन नहीं खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो इसमें है. So this is the most important thing I liked about this product. So I can say my conclusion is, if you are a guy who really wants to lift weights, who go gyms regularly, so if you like lifting heavy weights and if you want an edge, so you can use this supplement.
So that was all in this video. My conclusion: if you have a budget, if you are a regular gym goer, if you want to lift weight, if you want to make your workout a very explosive one, very powerful, so yes, you can go with this supplement, and I would say this supplement is the best right now in this category. So guys, that's all in this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. So for now, that's it. Bye bye. I love you, you love me, you know that, I feel that, I want you, you want me, you feel that, I know that, I want you, you want me, you feel that, I know that.